Hello friends, welcome to my scholars. In this video we shall learn conditions for congruence, which is very important. Conditions for the congruence of triangle. Master the concept of congruence of triangle. I am Samir and you are watching my scholars. तो इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से. We shall master the concept of congruence of triangles in this comprehensive tutorial. Whether you are preparing for class 7th to 9th or competitive exams, this video breaks down everything you need to know about tangential triangles. तो आप चाहे किसी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या 7th से 9th किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है. तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें. इन दिस वीडियो वी विल कवर व्हाट डज कॉन्ग्रुएंट एक्चुअली मीन. तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे सबसे पहले कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, द 5 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, और कॉन्ग्रुएंस के 5 क्राइटेरियाज जैसे कि SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंडिंग CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड YSSA and AAA don't work. तो ये भी देखेंगे कि SSA और AAA कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्यों नहीं चलता है. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व एग्जांपल्स टू क्रैक योर एग्जाम्स. So let us see this video completely. We shall start. First is SSS or side condition. Second is side angle side condition. And third is angle side angle or ASA condition. Fourth is angle side condition. And fifth is RHS condition. R for right angle, H for hypotenuse, and S for side. So we shall see one after another conditions. First we see our first condition, which is SSS in detail. Before going through SSS, side, first we shall understand what is congruence. पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है. ये हमारे पास सपोज ये ट्रायंगल है, ये ब्लैक ट्रायंगल है, और ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, ये ब्लू ट्रायंगल है. तो अगर हम इस ट्रायंगल को, इफ़ वी पुट दिस ब्लैक वन ऑन ब्लू वन or blue one on black one, side AB completely covers side DE, side BC completely cover EF, and side AD completely cover DF, and the vertex A fall on the vertex D, vertex B fall on the vertex E, and vertex C fall on the vertex F, i.e. this triangle whole cover that ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल completely cover that triangle. तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स दिखाई ही नहीं देंगे, एक ही ट्रायंगल के पार्ट दिखाई देंगे. दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस. मतलब कि एक ट्रायंगल के सारे पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के सारे पार्ट्स के बराबर होते हैं. एंड द सेम इज द कंसेप्ट ऑफ CPCT, means that corresponding parts of congruent triangles.
Like triangle ABC is congruent to triangle DEF. Therefore, AB is equal to DE, BC is equal to EF, and CA is equal to FD. And angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F. In that condition, these are known as the corresponding parts of congruent triangle. इस एंगल के लिए ये एंगल, ये नहीं, इस एंगल के लिए ये एंगल, दूसरे एंगल्स नहीं, इस एंगल के लिए ये एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे. तो अब हम समझते हैं व्हाट इज एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. In triangle ABC and DEF, side AB of triangle ABC is equal to side DE of triangle DEF, DE, and this way AB, DE, and side BC of this triangle BC of the triangle ABC, BC is equal to side EF of the triangle DEF, EF of the triangle DEF, and side AC of the triangle ABC, AC is equal to side DF of the triangle DEF. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by side criteria or side congruence condition. तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के बराबर है और इस ट्रायंगल की ये साइड इसके बराबर है, इस ट्रायंगल की ये साइड इसके बराबर है. तो साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. सेकंड कंडीशन हम स्टडी करते हैं. अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं PQR एंड KLM. We have two triangles PQR and KLM. So we shall see in these two triangles as side PQ is equal to side KL. PQ is equal to KL, and angle PQR is equal to angle KLM. This angle should be in the middle of two sides, should be in between of two sides, and third side QR is equal to LM. Therefore, in this condition, triangle PQR is congruent to triangle KLM by side criteria. साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखते हैं कि सपोज PQ इज 5 सेंटीमीटर and KL is also 5 centimeter, and angle PQR is 60 degree. So as angle KLM is 60 degree and QR is equal to 7 centimeter.
and LM is equal to 7 centimeter. We shall write here 5 centimeter, 60 degree and 7 centimeter. This way these two triangles are congruent by side angle side criteria. Our next criteria is angle side angle. Third is angle side angle criteria. There are two triangles PQR and KLM. One is of green color and other is in red color. So we shall see this condition. In triangle PQR, and triangle KLM, angle RPQ is equal to angle MKL and side PQ is equal to KL. Angle PQR is equal to angle KLM. Therefore, triangle PQR is congruent to triangle KLM by angle side angle condition. By angle side angle condition. Or angle side angle criteria. Of congruence. Now we shall see an example of such congruence condition. Let the angle P is 50 degree and the side PQ is 4 centimeter and the angle Q is 70 degree. So as the angle K is 50 degree and KL is 4 centimeter. And angle KLM is 70 degree. So this way, this angle is 50, this is also 50, this side is 4 centimeter, this side is 4 centimeter, this angle is 70, this angle is 70. This way triangle PQR is congruent to triangle KLM by angle side angle criteria. Fourth is AAS congruence conditions in triangle DEF. DEF and triangle RST. Angle DEF
is equal to angle RST. Angle EFD is equal to angle STR, and side FD equal to side TR. Therefore, triangle DEF is congruent to triangle RST by angle by AAS congruence condition. For example, we take RST DEF is equal to 70 degree and RST is 70 degree. This we take 60 degree, angle EFD 60 degree, angle STR is equal to 60 degree, and the side not common between these two angles. ये साइड नहीं, EFST नहीं, कोई भी एक साइड RT या RS DF या EF के बराबर हो. Suppose it is 6 centimeter. It is also 6 centimeter. So this way, triangle DEF is congruent to triangle RST. This is also like as side angle side, because of when the two angles of a triangle are equal, third angle will be equal by the angle sum property of a triangle. Fifth condition is RHS congruence condition. There are two triangles, one is red one and other is green. Red one XYZ and green LMN. So in triangle XYZ and LMN, angle XYZ is equal to angle LMN is equal to 90 degree. And the side hypotenuse, this is hypotenuse opposite to the right angle. So XY is equal to LN. And the other side, any of the two sides we can take. This YZ either or XY. So taking YZ is equal to MN. Therefore, triangle XYZ is congruent to triangle LMN by right angle hypotenuse and side.
For example, we can take, if the hypotenuse, length of hypotenuse is 10 centimeter, this hypotenuse, this is also 10 centimeter, and the side is 4 centimeter, this side is also 4 centimeter. So this way 90 degree, 10 centimeter and 10 centimeter, YZ is equal to MN 4 centimeter. This way these two triangles are congruent by right angle hypotenuse and side congruence condition. So this way there are different congruence conditions, and I have also explained using solved examples. आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।